Hello everyone, welcome to Study with Rajiv. This is the sixth episode of Science NCERT series that we are doing. Yes, I am late. Sorry for it was festive season. So today we will read chapter 6 which is called Changes Around Us. तो changes का मतलब क्या है कि आप अपने आसपास कैसे चेंजेस देखते हो। तो इस जैसा आप फिर से वी विल टेक द हाउस होल्ड एग्जाम्पल्स कि आप एक बलून लो, उसको फुलाओ। फुलाएंगे तो क्या होगा कि फुला लिया, अब उसको वापस से उसकी हवा निकाल दो, देन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। लेकिन उसमें नाउ व्हाट यू डू कि आप शैतानी करो और आप उसको फोड़ दो। आपने उसको फोड़ दिया तो क्या अब वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि रोटी बनाते हैं तो आटा सानते हैं, लाइक डो दैट यू मेक। नाउ दैट डो कैन बी रीशेप्ड एंड नंबर ऑफ टाइम्स, बट वंस दैट डो इज शेप्ड इनटू रोटी एंड बेक्ड चपाती, अब पकी हुई चपाती को आप वापस डो बना सकते हैं? नो। सो हियर व्हाट वी सॉ कि one change, that the balloon getting back into its original shape, that is reversible change, and another that it cannot be changed into its original shape, that is irreversible change. So we can categorize changes into रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जैसे आप दूध से दही बना लो, अब एक बार ही दही बन गया, then dahi can't be changed into curd, that curd can't be changed into milk. So this is an irreversible change. In the further classes we'll study कि this is a kind of physical change and chemical changes, या reaction कह सकते हैं बाद में. So physical changes की one which can be reversed, कि physically उसमें balloon का shape change हो रहा है and it is coming into original shape, लेकिन that once the balloon is blasted it cannot. तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ये इरिवर्सिबल चेंजेस है. सो अब जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर की एरोप्लेन्स बना लो, दैट यू शेप इट, फोल्ड इट एंड मेक अ एरोप्लेन. लेकिन सेकंड चाइल्ड वांट्स टू मेक it by cutting it. So once you cut it, you can't change it. So it is an irreversible change. So changes can be of two types. One is reversible and another is irreversible. There is nothing much in this chapter. Only examples ki which changes are reversible and which changes are irreversible. So we have seen कि क्या क्या है. अब जैसे common changes that we see कि जो कच्चे अंडे उनको आप बॉयल करो, तो कैन यू रिवर्स इट? बॉयल अंडा को कच्चा बना सकते हैं? नो. इडली से बैटर बना दिया? नो. वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स? यस. कपड़ा सूखा है तो आप उसको वापस से गीला कर दो. सो दिस इज़ रिवर्सिबल. यस, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. अब है कि अब जो ये चेंजेस हैं ये आ कैसे रहे हैं, या कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज एज वेल, कि आप अलग अलग तरीके से कैसे चेंज ला सकते हो. तो यहाँ पे जैसे एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज टूल्स दैट आर यूज्ड इन वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क्स. तो यहाँ पे सपोज देयर इज़ एन एक्स. अब जो एक्स का मिडिल वाला जो नॉब है, होल है, उसमें जो स्टिक को हमें फिक्स करना है, दैट रिंग दैट यू सी इन द फिगर, ये दिस इज़ क्वाइट स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द स्टिक दैट वी वांट टू इनकॉर्पोरेट इन इट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सो बेसिकली वी हीट इट. तो हीट करने से क्या होगा? तो द मेटल विल एक्सपैंड. तो मेटल विल एक्सपैंड. तो अब वो पहले छोटे साइज़ का था, नाउ व्हेन यू आर हीटिंग इट, इट इज़ एक्सपैंडिंग. तो अब ये जब एक्सपैंड हो गया, देन यू फिक्स द दैट वुडन स्टिक इनटू इट, एंड अब ये साइज़ का है, फिट हो गया. नाउ यू वांट अ ग्रिप. For that grip we will pour water into it. So when we pour water, then the temperature suddenly goes down, so it will contract. So what we saw कि there are two
changes. One is expansion, that the metal is got expanded while heating, but when you pour water, then temperature goes down, then it contracts. So there are two phenomena that we're seeing, which is expansion and contraction. Same we do with the cart wheel, with a metal rim fixed on it. Matlab, nowadays it is not much visible on the roads, but some people must have seen that bullock carts or the horse carts on the roads. They have that wheel on metal rims attached to it. So that also wooden will पे metal rim ऐसे ही fix करते हैं. You heat it, then expand it, then contract it. Burning of candle as well, you think of it, is it reversible or irreversible? The wax will get exhausted. How can you reverse it? Obviously no. So this is only what we have in this chapter, ki there are changes around us, which we see on a daily basis. In these changes, some are reversible, some are irreversible. When you heat a metal, it expands. When you temperature goes down, it contracts. कपड़े सुखाते हैं, that also we have studied in the earlier chapter. Remember कि what we studied कि evaporation, what is it? तो one state to another, like when the liquid becomes vapor, it is called evaporation. Melting wax है तो it will melt. That's it. It's just that you go through the chapter only once and just try to think of these examples around you. Okay, on the daily life में what are the changes that we see, which are reversible, which are irreversible, then you will get it accurately कि, oh, this is what we need. That's it for this chapter. Now we will see this plant wala chapter. It is very important. This we will see in the next video. Thank you for watching. You know what to do. Like, share, subscribe, and you read the chapter. Focus on your studies.